Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. So this is me Alia Wahid, and in this channel we are going to discuss about the direct acting adrenergic agonist. So the first our direct acting adrenergic agonist is the epinephrine. Then we discuss non-epinephrine, we discuss dopamine, and other direct acting agonists. So first of all, let's discuss about the epinephrine. So you know very well epinephrine is produced naturally. Norepinephrine is also produced naturally. Dopamine is also producing naturally. But these drugs which I have written here, these all are synthetic, like dopabutamine, phylloxamidine, isoprenaline, oxymethazole, propranolol, phenylephrine, and glenbuterol, midrabigine, methamphetamine, and clonidine and lofrenine. These all are synthetic, while these three are naturally occurring. Let's discuss about their source. So their source is renal medulla. So actually, they in renal medulla, the norepinephrine is going to produce. Okay, so what is going to happen here? I am writing here. So here in adrenal medulla, your norepinephrine is converted into the epinephrine. So here I have written here that your norepinephrine is going to convert into the epinephrine due to methylation, due to the add of methyl group. So after becoming the after the formation of epinephrine, this epinephrine is going to store into the chromaffin cells of the adrenal medulla. So actually adrenal medulla, in adrenal medulla naturally epinephrine is produced. Okay, and same the case is for source of the epinephrine, because it is also producing from the adrenal medulla, and after it's producing it is converted into epinephrine. So 80% of epinephrine is produced by adrenal medulla, and just 20% of norepinephrine is produced. And whenever the adrenal medulla is stimulated, then it will release 80% of epinephrine and 20% of norepinephrine into the blood circulation. Next, your dopamine is also naturally produced, but its source is just a little bit different. So it is present in the CNS basal ganglia and also present in the adrenal medulla, while all other are synthetic. So they will be discussed at the later. Now let's discuss about their receptors, on which receptors they are going to be acted. If we are discussing about the epinephrine, so epinephrine act on both receptors, on alpha as well as on the beta, but the difference of the dose. If the dose is low, then it will stimulate the beta receptor. If the dose is high, it will stimulate the alpha receptor. So this is the difference about the epinephrine. So whenever you have to remember it, just remember that epinephrine is the friend of alpha receptor. So always we give more epinephrine to alpha. Alpha will like it and alpha will help it, and beta will not like the epinephrine in low concentration. So this was the trick to remember it, that epinephrine is the friend of alpha receptor. And if you let's consider about the norepinephrine. So norepinephrine is particularly giving more respect to the alpha receptors over the beta receptors. So epinephrine is giving respect when it is high, okay, but epinephrine is giving respect whenever it is low. So always it is going to prefer the alpha receptor over the beta receptors, okay. So norepinephrine is most best friend of alpha receptor. So you can say that epinephrine is the friend of alpha, but norepinephrine is the best friend of alpha receptor. Okay. So this was a trick to remember that. Then discuss the receptors of dopamine. So dopamine react on both receptors of alpha and beta, but it also react on two other receptors which are D1 and D2. These are the dopamine adrenergic receptors. So where the D1 and D2 are present, so D1 receptor is present in the blood vessels of renal, ठीक है, हमारी किडनी के blood vessels में D1 present है, and they are responsible for the vasodilation of the blood vessels of our kidney. So whenever and the D1 is activated, it's mean the blood flow to the kidney is increased. Now let's discuss about the position of D2. So D2 is present presynaptically, because and it is responsible for the release of, for the increased release of norepinephrine. So dopamine is helping
norepinephrine, and you can say that it is increasing the release of epinephrine from presynaptic neuron, so creating more and more sympathetic activity. Now the next point of all of them is that their action. So their action is quite similar, but the action of epinephrine is quite more. First of all, let's discuss about their action on the heart. So they are acting on beta 1 receptors. So the beta 1 receptors are present on the heart as well as on the kidney. So epinephrine is going to activate beta in low dose. So the beta 1 is activated at the low dose on the heart as well as on the kidney. On the heart, it will increase cardiac output or heart rate, or on the kidney, it will release renin and cause vasoconstriction here. Let's discuss about their action on the blood vessels. So in the blood vessels, two types of receptors present. So the first, the alpha 1 receptor, you know very well that the alpha 1 receptors are present in the blood vessel. So epinephrine will bind with that and cause vasoconstriction. But there are some types of beta 2 receptors which are present in the blood vessels, which are going toward the liver and toward your skeletal muscles. And here it is called vasodilation. So what is going to happen that similar at the same time the vasoconstriction and vasodilation is happening. So what is the result of it is that due to the vasoconstriction of arterioles, your systolic blood pressure will increase, but due to the vasodilation in skeletal muscles, your diastolic blood pressure will decreases. So here, this is the change which see in the patient after injecting the epinephrine. Now the next action of epinephrine is in the lungs due to the beta 2 receptors. So the beta 2 receptors are in the lungs or in the bronchioles. So it is responsible for the vasodilation of bronchioles and causing the less secretion. So whenever the vasodilation occur in bronchioles, the secretion is decreases, and whenever vasoconstriction occur, mean a bronchoconstriction occur, then the secretions increase. And what are these secretions? Actually, they are the histaminic secretions which are released by the mast cells. And histamine is responsible for the allergy. So, due to the visualization, histamine decreases, and histamine is responsible for allergy. So, therefore, your allergy will decreases. Then the next section is on the liver. So you know very well in liver your beta 2 receptors are present, and they will break the glycogen. So glycogenosis will occur in liver, so they are producing more and more glucose. And why you need glucose? Because you are going to fight. So this is the adrenergic agonist, mean you are in the sympathetic pathway, or you are in the sympathetic mood. So you are in the fight and flight mode and you need energy. So therefore glycogen break into glucose in your liver due to the beta 2 receptors. And at adipose tissue, you know very well that beta 3 receptors are responsible for lipolysis. And in the eye, it is alpha 1 receptors are present which are causing the midrosis. So first of all, you have to remember this concept that we have discussed in cholinergic agonists, that mostly of them have action on their eyes, and they are causing here the contraction of pupil, not the midrosis. Okay, so here we have discussed that most of ophthalmic solutions contain cholinergic agonists to constrict your pupil. But in the case of adrenergic agonists, you will see very less drugs which are made for eye or which have action on eye. So this was the thing you have to remember, because we don't need eye to expel or relax the pupil. Okay, so the pupil contraction is needed when we are doing the eye surgery. So therefore a lot of drugs are made about the cholinergic agonist, but here we don't need the midrosis of eye, so therefore there are very less drug about that. So this was the tick trick point to remember that. Now let's discuss about their importance to treat specific diseases, like it is used to treat cardiac arrest, local anesthesia. Cardiac arrest, why it is treating cardiac arrest? Because it is acting on the heart on what type of receptor? Beta 1 receptor,
causing increase in the heart rate. So a person with cardiac arrest will take epinephrine. And one thing remember about the pharmacokinetics of the epinephrine is that it cannot be given orally, because it is very ineffective, because very well in your gut, in your liver, comet and uh, M, MAO enzymes are present. These enzymes will break your epinephrine and make it ineffective. So therefore you have to take the epinephrine in parentally, mean by the injection. So after taking that, it has very slight duration, mean very short duration, but it effective. So it is used to treat cardiac arrest and local anesthesia. It is given with the local anesthesia in order to produce the effect at that area. Let's suppose you want to swell any area. Let's suppose I am wanting to swell this area of my hand, and I am inject the anesthesia over here. And after the anesthesia, I will give epinephrine via injection through at that area. So epinephrine, after going into that area, epinephrine will cause the vasoconstriction on that area. After this vasoconstriction, the local anesthesia will produce more effect over this area. So in this way, they are helping the local anesthesias to increase or to make them more effective. Next, they are also used in the intraocular surgery for the midroses, okay, but very in a less amount, okay. And then it is also used to treat anaphylactic shocks, which are due to the less heartbeat or less cardiac output, okay. There are some adverse effects of it. First is the CNS effects. So you know very well that epinephrine, it is the catecholamine, and we have discussed that catecholamine cannot enter the BBB, mean blood brain barrier. So, and now we are saying that they have CNS effects. So yes, this is very shocking for us that it is not entering into the CNS due to its polar hydroxyl group, but yet it is causing some types of CNS effects. And the CNS effects are not very severe. One thing you remember too, that these CNS effects are not severe. They are just like headache. You can feel headache, you can feel some nausea, you can feel tiredness or something like that, okay. You will feel weakness, okay. So they are not severe CNS effects. Next effect is the cardiac arrhythmia. Cardiac arrhythmia mean you feel the disturbance in your heart rate or in your heartbeat. Then your heart rate will increase more and more, and the pulmonary edema are the adverse effect of it. Next thing you have to remember, all the adrenergic agonists will have same side effect as that of it. Some have some kind of differences, but majorly has same side effects. Now let's discuss about the norepinephrine. So it is actually naturally source is adrenal medulla is producing it. Receptors, you know that norepinephrine is the best friend of alpha receptor, while epinephrine is just the friend of alpha receptor, okay. And more thing you can differentiate that, you can say that epinephrine is just the class fellow of alpha receptor, and norepinephrine is the best friend of alpha receptor, okay. So let's discuss about the action of norepinephrine. So here is the action of norepinephrine. So action on the heart, on the heart, it is decreasing heart rate. This is quite very shocking for us, है ना? That it is causing a very slow amount of bradycardia. You can say very slight bradycardia. So usually you can skip this action. Okay, just skip that. Only discuss their action on the blood vessels of increasing blood pressure, okay. So they are acting on blood vessels on the alpha receptor because they are the best friend of alpha, and they are vasoconstricting. It also stimulate the beta receptor. Beta receptors are present, they are sensing the change in your blood pressure, so they will increase the blood pressure. And it is used to treat septic shock. This is a type of shock which is due to a bacteria, and it is not used clinically. You know, it has very small kind of effect, while the epinephrine has lot of effect. So therefore, norepinephrine has very short effect. You can remember that. Always remember it that epinephrine is present on the first
as a first adrenergic agonist. So the first is the first. So the first will always come first and has a lot of work and a lot of actions. So therefore epinephrine is used clinically and norepinephrine is not used clinically. Then what is the kinetics of it? So always they are given IV through the injection, and duration is about 1 to 2 minutes. After 1 to 2 minutes they will release through the urine. And what are the adverse effects? The adverse effect is the tissue necrosis. Other adverse effects are similar to the epinephrine, just different adverse effect is that it can cause tissue necrosis if it cross out of a blood vessels. Let's suppose I have given a patient an injection of norepinephrine. So here is the blood vessel, and in the blood vessel epinephrine is, norepinephrine is present, and this epinephrine can cross out of this blood vessel and can be separated into the tissues. So it will cause tissue necrosis, mean tissue damage, and it will increase more and more your blood pressure and cause more and more vasoconstriction, which is dangerous for the patient. Okay, now we are going to discuss about the dopamine. So I have explained to you that their source is from the CNS and adrenal medulla. Receptors are alpha, beta, D1, D2. Where is D1? It is on the blood vessel of renal, causing vasodilation. Where is D2? Presynaptic neuron. And what is it causing? It is increasing the norepinephrine release because it's the friend of norepinephrine. So now what is the action of it? So here are the action of D2, dopamine. So first action is on the heart of beta 1. So it is acting on the beta 1, yes, okay. So increasing heart rate. On the blood vessel alpha 1, causing vasoconstriction. But D1 receptor, which is present in the blood vessel of renal, causing vasodilation. So here, due to the vasoconstriction, the systolic blood pressure increases, but due to the dilation, diastolic blood pressure decreases. But in case of norepinephrine, due to vasoconstriction, the systolic pressure as well as diastolic pressure both increases. ठीक है? So here it is used to treat septic shock. It is used as a diuresis. Diuresis means they are increasing the urine production. So one thing you have to remember this concept: whenever your blood pressure is higher, then what will happen? More and more renin will release, and more and more renin-angiotensin system. And after, due to this renin-angiotensin system, more and more vasoconstriction will occur and more urine will produce. So actually high blood pressure is acting as a diuretics. Next thing, uh, it is used to treat the low heart rate. So a person with low heart rate or heart failure can be given dopamine in order to treat her. Next, the adverse effect is same, arrhythmia and CNS effect. And what are CNS effect I have explained, nothing is to repeat. So the next receptor is dobutamine. So dobutamine, now the dobutamine is synthetic. So it is not produced naturally. So we are not going to revise its source. Quickly come on its receptors. So receptors are both alpha and beta receptors, but majorly it is acting on beta 1. So why it is acting on beta 1? Due to the word B, which is came in its spelling. Okay, so it is acting on beta 1. Beta 1 receptors are present where? On the two locations. Quickly remember that. Yes, beta 1 are present on the heart, on the kidney. So on the heart, it is responsible for the high heart rate and high cardiac output. So adverse effects are same, no need to repeat. Next drug is isoproterenol. Isoproterenol is same, a synthetic drug. Receptors are both alpha and beta, but majorly on beta receptors. Majorly on beta receptor. Both beta receptors mean beta 1 and beta 2 also. So quickly remember all of the things which we have we have learned. So epinephrine acting on both receptors, but on high doses it is the friend of alpha, on low doses it is beta friend. Then norepinephrine is both acting on both alpha and beta,
but it is preferring alpha receptors. Then dopamine is acting on both alpha, beta, D1 and D2. But on low doses, it is beta, high doses, alpha. Then dobutamine is acting on beta 1, but acting on both. And isoproterenol, it is acting on both, but friend of beta receptors, beta 1 and beta 2 both. ठीक है. Now let's discuss their action. So if they are beta 1 or beta 2, so beta 1 heart, beta 2 blood vessel and beta 2 lungs. So they will be added to the isoproterenol action. ठीक है. But adverse effect is that it is not used clinically. This is the adverse effect of it. Okay. So it is not used clinically, and norepinephrine is not used clinically. So the two drugs are used which are not used clinically more because of their some types of side effects. Okay. So now let's discuss about the another drug which is phenodopam. Phenodopam. So it is acting on the receptor D1 because the word D came in its spelling. In the spelling of dobutamine, B word came, therefore it is acting on beta 1. But here D came, so therefore it is acting on D1. It is acting on B1, it is acting on D1. Dono are one, but B and D is different. So the action is on blood vessel of what? Renal, causing vasodilation, treating hypertension. So a person with hypertension easily given the phenodipam. Vasodilation occur, quickly treatment. Okay, adverse effect are same. Next drug, oxymetazoline. Oxymetazoline. ऑक्सीजन चाहिए, किसको चाहिए? मेटा को, जो लाइन करने के लिए. ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए मेटा को, जू को घूमने के लिए. रिसेप्टर्स अल्फा है. ठीक है, आइसोप्रोटिनॉल में दोनों बीटा थे, यानी बीटा 1 भी था, यहाँ पर बीटा 1 भी था, बीटा 2 भी था. यहाँ अल्फा 1 भी है और बीटा 1 भी है, क्योंकि इसकी स्पेलिंग में मेटाजोलाइन में एल ए आ गया अल्फा से. मेटाजोलाइन अल्फा 1 अल्फा 2 भी. ट्रीट किसको कर रहा है जी? नेजल डी कंजेस्टेंट को, यानी नेजल की कोई डिजीज़ आ गई है तो उसको ट्रीट कर रहा है, रिलीफ कर रहा है रेडनेस ऑफ आई. अगर कहीं आई में रेडनेस हो गई है किसी भी वजह से, हम स्विमिंग करते हैं, हम डिफरेंट स्पोर्ट की एक्टिविटी करते हैं, या कोई भी चीज़ चला जाता है ठीक है आँख के अंदर, तो रेडनेस हो सकती है. उसको ट्रीट करने के लिए ये जो ड्रग है वो हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है ना. तो स्विमिंग करते वक्त कोल्ड हो जाता है, या कॉन्टैक्ट लेंस जब आप लोग पहनते हैं तो स्पेशली उस वक्त रेडनेस हो सकती है, तो उसके लिए फिर हम ऑक्सामेटाजोलाइन देते हैं, जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 पे एक्ट करेगा. अल्फ़ा 1 आप लोगों को पता है आइज़ के अंदर प्रेजेंट होता है, अल्फ़ा 2 प्री साइनेप्टिकली न्यूरॉन्स पे प्रेजेंट होता है. सो ये इस तरह नेज़ल डिकन्जेशन के लिए यूज़ होते हैं. और कुछ मेडिसिन हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं और जो नेज़ल डिकन्जेशन को ट्रीट कर रही हैं. एक तो ये वाली ड्रग है ना, एक हमारे पास नीचे वाली ड्रग है और एक ये वाली ड्रग है. कौन सी वाली है? ये वाली है जो इसको ट्रीट कर रही है. मैं बताती हूँ आप लोगों को. ठीक है ना. ऑक्सामेटाजिलाइन जो है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 नेज़ल डिकन्जेशन को ट्रीट कर रहा है, रेडनेस से रिलीफ दे रहा है. देन फिनाइल एपिनेफ्रीन की बारी आ गई. फिनाइल एपिनेफ्रीन. तो फिनाइल एपिनेफ्रीन का स्ट्रक्चर भी मिलता था हमारे एपिनेफ्रीन से. यस. तो फिनाइल एपिनेफ्रीन जो है, क्योंकि ये एपिनेफ्रीन से मिलता है और हमने कहा एपिनेफ्रीन अल्फ़ा का दोस्त है, तो इसी वजह से फिनाइल एपिनेफ्रीन भी अल्फ़ा 1 के साथ दोस्ती करेगा. ठीक है, तो ये भी अल्फ़ा 1 के साथ दोस्ती करेगा. एक्शन इसके क्या हैं देखें, क्योंकि ये एक्शन कर रहा है आपके ब्लड वेसल्स के ऊपर, तो ये क्या कर रहा है, वहाँ पर वैसोकंस्ट्रिक्शन कर रहा है, हार्ट के अंदर इंक्रीज कर रहा है हार्ट रेट को, और नेज़ल डिकंडक्शन को ट्रीट कर रहा है. हाइपरटेंशन, नेज़ल डिकंडक्शन और मिड्रोसिस के लिए ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन में यूज़ हो रहा है. मैंने आपको कहा था ना कि बहुत सी कम सी ड्रग्स हैं जो मिड्रोसिस के लिए यूज़ होंगी. इसमें एक फिनाइलेपिनेफ्रीन भी थी और हमारे पास साथ ही साथ हम लोग एपिनेफ्रीन को यूज़ कर रहे थे. तो दोनों देखिए मिल रहा है. ठीक है ना. मिड्रोसिस के लिए, नेज़ल डिकंडक्शन के लिए इसको यूज़ करें, और किसको नेज़ल
ऑक्सीमेथाजोलाइन को यूज़ कर रहे थे, साथ ही साथ रेडनेस ऑफ आई के लिए भी उसे यूज़ कर रहे थे। फिनोडिप्डोपाम को हम क्यों यूज़ कर रहे थे? यस, वो क्योंकि D1 पे है और वो फिर उसको ट्रीट करेगी, ठीक है। सो ऑक्सीमेथाजोलान को हम यूज़ कर रहे थे नेजल डिकंजेशन, फिनाइल एपिनेफ्रीन को कर रहे हैं। सो इन ड्रग्स को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ड्रग्स आ जाती हैं, ये थोड़ी सी आपके लिए डिफ़िकल्ट होंगी, बट हम लोग रिवाइज करते रहेंगे ताकि हमें एंड तक याद हो जाए। सो आइसोप्रेनल, सालब्यूटामोल और सालमेरिटोल, ये 3 ड्रग्स हैं जिनके रिसेप्टर भी सेम है और ये ट्रीट भी एक ही चीज़ को कर रहे हैं। इन सब के रिसेप्टर बीटा 2 रिसेप्टर्स है जो कि लंग्स के ऊपर होता है, ब्रोंकियो डायलेशन कॉज कर रहा होता है और अस्थमा को ट्रीट करता है, क्योंकि अस्थमा के पेशेंट के अंदर ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन हुई हुई होती है। सो इससे ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन को ट्रीट करने के लिए हम ये दवाइयाँ देते हैं, आइसोप्रेनलिन, साल ब्यूटामोल और साल मेरिटोल। ये तीनों ड्रग्स जो हैं वो अस्थमा को ट्रीट करने के लिए हैं, रिसेप्टर भी एक ही है। नेक्स्ट जो ड्रग आ जाती है वो है सेल ब्यूट्रोल। सेल ब्यूट्रोल का भी रिसेप्टर तो एक ही है, मतलब बीटा 2 रिसेप्टर है, बट एक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये मसल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो इसके ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं क्योंकि बुक में इसका नाम लिखा है तो हम भी इसे याद कर लेते हैं, लेकिन अगर ये भूल भी जाता है तो इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। सो बस याद रखना कि रिसेप्टर कौन सा और काम क्या कर। मेराजीब्रोन, तो मेराजीब्रोन ये पहली ड्रग है जिसने बीटा 3 के ऊपर एक्ट किया और बीटा 3 के ऊपर ट्रीट कर रहा है ये ओवर एक्टिव ब्लैडर को। तो अब आप लोग क्यों होंगे परेशान, क्योंकि आप कहेंगे कि जो बीटा 3 रिसेप्टर्स थे वो तो थे सिर्फ एडिपोज टिश्यू के ऊपर, वो सिर्फ लिपोलाइसिस कर रहे थे। यस, आई नो, मैंने आपको यही बताया था कि बीटा 3 वहीं पर प्रेजेंट है, बट कुछ बीटा 3 रिसेप्टर्स हैं जो कि यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं, बट उनका जो काम है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होता है, तो इसलिए हम उनको वहाँ पर कंसिडर ही नहीं करते। जहाँ उनका इफेक्ट मेजरली नज़र आता है हम उधर बताते हैं। तो बीटा 3 का मेजरली तौर पे एक्ट एडिपोज टिश्यू में है, बट हाँ उनका ब्लैडर के ऊपर भी इफेक्ट है। तो अगर हम मिड्रा बिरोजिन देंगे तो वो वहीं के सिर्फ रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा और ओवर एक्टिव ब्लैडर को ट्रीट करेगा। तो अगर किसी का ओवर एक्टिव ब्लैडर है तो हमने उसको मीरा जिब्रोन दे देनी है, मीरा उसको पकड़ा देनी है, मीरा हम कह सकते हैं, ठीक है। ओवर एक्टिव ब्लैडर वाले को हमने मीरा पकड़ा देनी है, ठीक है। सो मेथाऑक्सीमाइन नेक्स्ट ड्रग आ रही है। सो मेथाऑक्सीमाइन अल्फा रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रही है। मेथा वाले 2 हो गए हैं ना, एक था ऑक्सीमेथाजोलाइन, एक है मेथाऑक्सामाइन, ठीक है, थोड़ा मिलता जुलता है। सो ऑक्सीमेथाजोलाइन भी नेजल डिकंजेशन को ट्रीट कर रहा था और वो दोनों अल्फा 1 और अल्फा 2 पे प्रेजेंट था, और मेथाऑक्सीमाइन जो है ये सिर्फ अल्फा पे है और नेजल डिकंजेशन को ट्रीट कर रहा है। देन लास्ट में हम लोग अपने ड्रग्स देख सकते हैं, कोलिनिडीन, लोफ्री एक्सिनडीन, और ये जो दो हैं ना ड्रग्स, ये अल्फा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर प्रेजेंट है। ट्रीट ये किस चीज़ को कर रही हैं, देखिए यहाँ हार्ट रेट को भी ट्रीट कर रही हैं और वेसोमोटर इंस्टेबिलिटी को भी ट्रीट कर रही हैं। वेसोमोटर इंस्टेबिलिटी का मतलब है हॉट फ्लैशेस आना, हॉट फ्लैशेस मीनिंग चेहरा रेड हो जाना। सो क्लोनिडीन और लोफी एक्सिनडीन जो है ये 2 ड्रग्स जो हैं उसके लिए यूज़ हो रही हैं। सो अब जी हम लोग करते हैं रिवीजन। सो रिवीजन में आप लोगों को मैं असल जो टॉपिक जो मैं रिवाइज करवाऊंगी वो मैं दिखाऊंगी नहीं, बट हम जब रिवाइज करेंगे। सो एपिनेफ्रीन नेचुरली प्रोड्यूस हो रही है, नॉरएड्रेनालिन से हो रही है। रिसेप्टर कौन कौन से हैं? सो एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, डोपामीन, ये सब नेचुरली थे, सोर्स भी आप लोगों को पता है। रिसेप्टर की बात करते हैं तो एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, डोपामीन और आइसोप्रेनलिन और ये सब जो हैं, और डोब्यूटामाइन भी, ये सब अल्फा और बीटा पे रिएक्ट कर रहे हैं। बट इसके साथ साथ एपिनेफ्रीन जो है उसका इफेक्ट अगर लो डोज है तो बीटा पे है, अगर हाई डोज है तो अल्फा पे है। सेम केस हमारे पास डोपामीन पे भी आता है, बट डोपामीन D1 पे भी एक्ट करता है, D2 पे भी एक्ट करता है। अगर हम नॉरएपिनेफ्रीन की बात करें तो उसको वो ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है अल्फा का। डोब्यूटामीन की बात करते हैं ना हम लोग, तो अब जाहिर बात है कि ये सिंथेटिक है और दो ब्यूटामाइन में ब्यू आ गया और बी से बीटा 1 पे आएगा, ठीक है। सो बीटा 1 पे क्या एक्शन करेगा वो आप सब लोगों को पता है, एक्शन रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। एपिनेफ्रीन हार्ट पे भी, किडनी पे भी, ब्लड वेसल पे भी कर रहा है, लंग्स, लीवर, एडिपोज टिश्यू, आई पे भी कर रहा है।
नोरेपिनेफ्रिन का ज़्यादा काम ब्लड वेसल पे है। डोपामीन की बात करते हैं तो इसने ज़्यादातर कहाँ रहना है, हार्ट और ब्लड वेसल्स के दरमियान ही रहेगा ये, और कहीं नहीं जाएगा। डोब्यूटामाइन हार्ट के ऊपर ही रहेगा, बीटा वन सिर्फ है ना। सो आइसोप्रेनॉल भी दोनों पे एक्ट कर रहा है, और आइसोप्रेनॉल के ऊपर दोनों बीटा एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बीटा वन भी बीटा टू भी, और जो जो बीटा वन बीटा टू के हैं वो हम लोगों ने लिख देने हैं। देन फिनोडिपाम डी आ गया तो ये डी वन पे एक्ट कर रहा है, किडनी की ब्लड वेसल को डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है, फिनोडिपाम भी हो गया। ऑक्सीमेथाजोलाइन, ऑक्सी में मैथा में ए आ गया था तो हमने कहा था ये अल्फा रिसेप्टर पे एक्ट कर रहे हैं, अल्फा के भी दोनों, ऑक्सामेथाजिनान और आइसोप्रोटिनोल दो रिसेप्टर पे एक्ट कर रहे हैं। नेजल डिकंडक्शन और रेडनेस ऑफ आई को ट्रीट कर रहा था। रेडनेस ऑफ आई कब होगी, जब हम स्विमिंग करेंगे, जब हमें बुखार होगा, और जब हमें तीसरा क्या कंडीशन थी, जब हमें क्या कॉन्टैक्ट लेंस हम वेयर करेंगे उसके बाद रेडनेस हो सकती है, तो उसके लिए ये ट्रीट देंगे। फिनाइल एपिनेफ्रीन डीन जो था वो हमने कहा था एपिनेफ्रीन का दोस्त है, एपिनेफ्रीन भी अल्फ़ा का था तो फिनाइल एपिनेफ्रीन भी अल्फ़ा का दोस्त होगा, अल्फ़ा वन का, ठीक है। और फिर ये ब्लड वेसल, हार्ट और नेजल डिकंडक्शन को भी ट्रीट करते हैं। फिर 3 ड्रग्स आ गई थी, आइसोप्रेनॉल, दूसरी की थी साल ब्यूटानॉल और साल मेट्रोल। ये 3 ड्रग्स हैं जो कि बीटा 2 पे एक्ट करती हैं और अस्थमा को ट्रीट कर रही हैं। फिर सल्ब्यूट्रॉल, जिसको मैंने कहा था इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी, तो बीटा 2 पे वो एक्ट करता है और मसल फ्रंट को इंक्रीज़ करता है। फिर हमने कहा था कि जिसका ओवर एक्टिव ब्लैडर होगा तो हम उसको मीरा पकड़ा देंगे। सो मीरा जिब्रोन जो है वो ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए है, आर थ्री बीटा 3 पे एक्ट करती है। फिर मेथाऑक्सीमीन एक ड्रग है जो कि नीजल डिकंजेशन के लिए है और ये अल्फ़ा पे एक्ट करती है। लास्ट में 2 ड्रग्स थी, कोनिडीन और लोफ्रिडीन, ये अल्फ़ा 2 पे एक्ट करती हैं, ठीक है, वो अल्फ़ा पे था, ये अल्फ़ा 2 पे हार्ट रेट और मोटर इंस्टेबिलिटी को ट्रीट करते हैं। तो ये थी हमारी सारी ड्रग्स जिनको हमने देखना था, जो कि डायरेक्ट एक्टिंग एडरेनर्जिक एगोनिस्ट हैं। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को ये सारा ड्रग्स जो हैं वो समझ में आ चुकी होंगी। सो आज के लेक्चर में बस हमने इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम नेक्स्ट कुछ ड्रग्स को कवर करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, लेकिन तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।